Jitendra, Namaste, Vanakkam, welcome back. So today, first day of Navratri. So taking the blessings of Mataji and let us begin off. Right. So today is 22nd of September. We'll be discussing levels for 23rd of September. Okay. So we're going ahead. I want every one of you to read this disclaimer. Right. And let us move ahead. So yesterday we marked up these levels, right, in Nifty, wherein I clearly said that at this resistance, if you get a red candle and you have to wait for going for short over this thin red line, I need another red candle, then only we will be able to go for short for this as a first target and this as a second target. Can you see here? This candle of 15 minute, we got a small closing below this red. Even if it is not this, you can consider this 145 candle. And after that, we got a candle at 215, right? So immediately we got this red one and another this. We touched this our second target also. The trade was completed. Setup also came. So that was a good sign. I always say, even in spot, if you find the candle closing at the levels, still you have to look out for the setups in the premiums, right? So today the level is beautifully played. First thing. Second, trend is still intact. मतलब downside के लिए थोड़ा ready होना है. Not a big downside, I'm saying, right? Because we saw in a weekly a 3 green candle forming, right? So once the 3 green candles forms, we generally get a red, but this red is in between this 50% of the body. Can you see it? So this is the reason कि भी थोड़ा careful रहना, because अपसाइड जाके फिर वापस आ सकता है. Let us see over here. See the 3 green and after this it started, but weekly closing के लिए इसके नीचे once it moved below this body, we got a confirmation. Currently are we below this body? No. So once it comes below the body, then you can say कि okay ठीक है, sell on rise का strategy highly है, but currently it is still on sell on rise as per 4 hours chart, right? 4 hours chart में we saw no this downtrend के लिए तैयार है, and today we got a good confirmation also कि भी downtrend है continuation में. Now 20 EMA पे bounce हो रहा है, तो 20 EMA तोड़ने के बाद ही 50 EMA पे जाएगा, ठीक है? So level to level play करना कितना important है? It is very important that you should mark the levels on a daily basis, understand at what level, if what type of a candle forms, then only you will be taking up a trade. Till that time, no. Did you get me? Chalo, let us fastly mark up the levels. So now this will be moving down. Let us move this down. Let us move this also down. Now this is going to be my support. Did you get me? Now this is going to be my support. This will be my blue. मतलब इसके ऊपर ओपन हुआ तो I have to be short के लिए मुझे ध्यान रखना पड़ेगा. This is going to be my resistance. Can you see? One time it took a support, second time it took a support, third time it took a support, and fourth time वो support को तोड़ दिया, and now it is taking as a resistance. Earlier support, now it is taking as a resistance, and over there we have a 50 EMA also. So that is also a resistance zone. Fine. If I break this resistance, yes, I can move from this level to
दिस लेवल, राइट, देन अपसाइड के लिए नेक्स्ट लेवल है दिस. Did you get it? So upside 1 level, 2 level and this blue will be the third level. वो ट्रेंड है मंथली का, वो तोड़ेगा तभी हम ऊपर की तरफ देखेंगे, राइट. सो नाउ द सपोर्ट is at 25,155 and if that support gets break there is a small level over here. इसका टिप है, can you see it? इसका टिप है, that is at 25,113 and if that gets broken then only I'll be looking out for a this one down. ये मेरा लास्ट लेवल रहेगा 24,913, राइट. डाउन साइड के लेवल्स मिले, हाँ. So now it will be easy to read it. So 25,240, if I open above that I have to wait till it goes till the resistance 25,290. If a red candle is getting formed over there, then I can look out for taking up a short wherein 25,239 will be my first target and then 25,155 will be my second target. ठीक है. And if I open flat, wait करना, या तो इस तरफ के लेवल ग्रीन कैंडल आएगा तो अपसाइड के लिए रेडी रहना, बट सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी रखना. डू नॉट गो फॉर अ बाय ऑन डिप वाला स्ट्रेटेजी. सेल ऑन राइज स्ट्रेटेजी इज करंटली द ट्रेंड इज इन दैट वे. ठीक है. सो एंड इफ आई ओपन गैप डाउन 25,155 के ऊपर है तो वेट करना, रेड कैंडल फॉर्म करेगा तो नेक्स्ट लेवल डाउन साइड इज 25,113 एंड if that gets broken with a red candle 25,064, right. उसके नीचे 25,000 का लेवल्स है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्लैट ओपन होएगा तो बेस्ट रहेगा, या गैप अप में ओपन होएगा बट बहुत ज़्यादा गैप अप नहीं चाहिए. फ्लैट और लिटिल गैप अप, गैप डाउन होएगा तो आपको वेट करना पड़ेगा बिकॉज प्रीमियम्स विल बी ऑलरेडी इन अ हायर साइड बिकॉज टुमारो निफ्टी इज अ एक्सपायरी. तो प्रीमियम मीटिंग के लिए चांसेस ज़्यादा हो जाएगा. लेट अस चेक आउट द ओपन इंटरेस्ट. Open interest PCR is at 0.5. Okay, so 25,300 calls and 25,500. 25,300 पे कुछ levels है क्या? Yes. And 25,500 बहुत ऊपर है, right? So wait करना and then trade करना, that would be the best situation. आज जैसे मतलब आज का ट्रेड जैसे अपने को क्लियरली दिख रहा था वैसे दिख नहीं रहा है, राइट. फ्लैट ओपनिंग, वेट, ऊपर जा रहा है, कहाँ ना कहाँ रेड करेगा तभी करना. ओआई पे थोड़ा ध्यान देना क्योंकि अगर दैट इज अ ड्रास्टिक शिफ्ट इन ओआई देन मार्केट उस तरफ खींचने की तैयारी ज़्यादा हो जाएगी. सो दिस इज अबाउट निफ्टी. सेंसेक्स सेम हुआ. सेंसेक्स का समरी भी अगर हम देखेंगे तो वी ओपनड गैप डाउन, सपोर्ट स्टार्टेड taking up a stand as a resistance, वहाँ से रेड, अगेन यहाँ पे रेड आया, then we got till this level, right. इसके नीचे we were not looking out for and वही हुआ, stagnant वहाँ पे ही रहा. now let us make a move कि भाई नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है. so this is going to be my support 82,067 levels and resistance is at 82,533. एक छोटा सा blue line रहता है which is about this candle, right. 82,192 सेम स्टैंड जैसे निफ्टी में है वैसे ही है. अपसाइड लेवल्स थोड़े कम है, डाउन साइड बेसिंग ज़्यादा है यहाँ पे, तो डाउन साइड के लिए भी यू हैव टू बी स्कल्प, मतलब ट्रेल करना ज़रूरी हो जाएगा. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से.
you will require to tail very fast. मतलब आप जैसे ही profits में आ रहे हो, you have to start taking up the trailing. So Sensex 82,533 is your this one resistance. 82,263 is your blue line and support is at 82,067. Support break करने के बाद 81,939, after that 81,760 and 81,586. ठीक है, upside resistance तोड़ने के बाद ही 82,736 and 82,970 supply zone है. So 82,970 will be the last which we'll be looking out for tomorrow. ठीक है. So this is about Nifty and Sensex. Bank Nifty, let us check it out. Bank Nifty be same situation. So now this will become as your support. Support तोड़ने के बाद next 55,071 levels which is correctly marked and 54,786. And if I, this will be the blue. And this will be my resistance. This will be my first target. This will be my second. आरती शुरू हो गई. So this will be my second target and this will be my third target. ठीक है, but trend is down, तो sell on rise का ही situation रहेगा. ड्रॉप बेस ड्रॉप अच्छे से है यहाँ पे भी. So लॉन्ग पोजिशंस के लिए until unless आपका रेसिस्टेंस नहीं तोड़ता है, आप उसको लॉन्ग के लिए रेडी मत होना. बैंक निफ्टी क्लियर. मिड कैप निफ्टी देख लेते हैं. मिड कैप निफ्टी ऑल्सो ट्रेंड डाउन. यहाँ पे तो आपका सप्लाई जोन एकदम क्लियरली है. ड्रॉप बेस ड्रॉप सप्लाई जोन इज वेरी क्लियरली शोइंग कि भाई सेलर्स आर टेकिंग अप द कंट्रोल. सो दिस इज गोइंग टू बी योर अ बिग जोन. इसके ऊपर क्लोजिंग आएगा तो ही आप लॉन्ग के लिए देखना, अदरवाइज नॉट. सो नाउ दिस इज माई resistance. This is my, after resistance get put, this will be the first level and this will be the second. ठीक है. डाउन साइड के लिए और सी यहाँ पे भी है 1 2. wow, super. This is going to be a huge support. 13,073 is a huge support for mid cap nifty. If that support gets broken, you can look out for 13,025 and then just one 12,980 levels. ठीक है. So this is nifty, mid cap nifty. Let us quickly take up a review. Swiggy, now the daily charts आ जाएगा. Swiggy I say एक डाउन आएगा थोड़ा ये लेवल्स पे, तभी we will be starting accumulating it. तो या यहाँ से रिवर्सल होएगा तो accumulate करेंगे, otherwise not. So Tata Motors, I think so we got entry, no, entry still little bit away, right? 2 rupees 3 rupees से मिस हुआ है. कल आएगा तो कल वेट करना और थोड़ा नीचे कुछ मिलता रहेगा इन एट दिस लेवल 690 लेवल्स पे, तो वी कैन स्टार्ट. बट 50% ही लेना, और बिकॉज द ट्रेंड डाउन आ गया है तो 50% ही एक्यूमुलेट करना, और थोड़ा नीचे जाएगा तो वी कैन एड अप अनदर 50%, बट इन फॉर दैट ऑल्सो द स्टॉप लॉस विल बी 665. ठीक है. ट्रेंड डाउन है 30% ही वी हैव एक्यूमुलेटेड. सो एट दिस पोजिशन वी कैन एड अप लिटिल बिट अनदर 50%. सो 80% का अक्यूमुलेशन हो जाएगा. 5000 के लेवल्स पे यू कैन एक्यूमुलेट द ट्रेंड. 5155 की आई थिंक सो इज अवर एंट्री, राइट. फेड फिना 2 rupees up, 150 is our buying price. Dixon 18,000. ठीक है. एंड इफ इट कम्स टू, मतलब कल इस लेवल के नीचे आया 7900 के नीचे लेवल आया तो वी विल बुक द डिक्सॉन. औरो फार्मा गुड पोजिशन. रिलायंस डाउन
right? 1414 is our buying price. We are down from that. TCS 3100 is our buying. We are 25 rupees down, not 25, 27 rupees down, right? So obviously it is because of US imposing H1B1 visa के fees increase करने की वजह से टेक पे थोड़ा hit आया है, right? Motherson is still in profit, so a good position we are holding. IGIL, IGIL I think so कल देखेंगे. If it goes below this 50 EMA, then we will book it. शायद कम मिलेगा अपने को, but we have to come out of that trade. Asian Paints still not in profits. Sagility again at cost, वापस आ गए. BDL looking out for a breakout. 5 EMA अच्छे position पे आया. 50 EMA 20 EMA is there and 50 EMA is below. We have got a good position, and even today after a Nifty falling 125 points, it was still at that point. So इसके पीछे का तो लॉजिक समझ लो. See, Nifty 120 points नीचे आ रहा है and your stock which you are holding, that is still at that same level, right? तो सोचो ना, Nifty if it starts moving in a positive points, तो इसको कितना पुश मिलेगा, right? Probability of getting the push will be higher. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसको push मिलेगा ही मिलेगा. The probability of the trade getting pushed will be higher. ठीक है? HAL वापस थोड़ा नीचे है, मिस हुआ, but since we are keeping it for a long term, we can, मतलब हर डाउन पे we can accumulate it. So next accumulation वापस 4600 के levels पे है. ठीक है? HAL is there. HCL Tech 50 points down because of tech पे heavy hit आया इस वजह से. ठीक है? So Tata Motors we might get entry tomorrow. That would be a good sign. Swiggy we will be waiting for it to come little bit below around 20 EMA. 433 के levels पे आएगा, then we will start accumulating. ठीक है? Obviously trend consistently up रहेगा तो ही, trend में अगर कुछ changes दिखा, then we have to wait for it to come little bit down and then we will add up Swiggy. Got it? Long term के लिए है, ये swing trading नहीं है Swiggy में. All equities, even if we have planned for a swing, till it doesn't hits our either of the targets, that is either SL or the profit target, we are not exiting it. Okay? So this is for the day. Have a great day tomorrow. Have a profitable day. Nifty expiry है, थोड़ा हीरो जीरो के लिए OI को चेक करके फिर ट्रेड करना. Have a safe trading. See you tomorrow.